बॉस को ढूंढना है। ओ इतना सारा एमो और राशन ज़रा सारा फुल ही है मेरा। मतलब मैं बिल्कुल स्टेल्थ यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट फिर भी मेरा एमो फुल है, मतलब सरप्लस एमो है मेरे पास। कौन सा वेपन यूज़ करें? आरपीजी बचा के रखेंगे, C3 को निकाल देंगे। C3 तो नहीं है हमारे पास। ये क्या है वेपन में, इसको क्यों इक्विप किया है मैंने? C3 निकालेंगे। ग्रेनेड इक्विप कर लेते हैं। एंड और क्या इक्विप करें? ये पता नहीं यूज़ कैसे करता है, एक बार फेल हुआ था। ठीक, ओके। कौन सा वेपन मैं यूज़ करूँ? स्नाइपर यूज़ करेंगे। तो कॉल ईवा दबाने से वो आएगी। ईवा को लीड करना है तो इसका मतलब है कि एनिमीज़ होने वाले हैं गेम में। मेरा रेडार कहाँ गया? मतलब इस एरिया में एनिमीज़ होने वाले हैं। बुलाते रहेंगे इसको एवरी फ्यू स्टेप्स। ईवा का HP भी दिख रहा है हमको। कॉशन में है एनिमीज। सिगरेट स्प्रे ट्राई करेंगे। कहाँ गया वो? ये है। ओह कैमो, मैं भूल ही गया, कैमो बदलना है हमको। ट्रिबार कौन सा बेटर है? कोई नहीं, ओके। फेस के लिए डालेंगे वुडलैंड 55%। गेम के स्टार्ट में कैमोफ्लेज बहुत हाई था मेरा, अभी बहुत लो है। हैं? किसने देख लिया मुझे? कोई एनिमी मुझे दिख नहीं रहा। ए कैसे देख लिया उसने? अच्छा ईवा को शायद स्पॉट कर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम शूट आउट अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट गन है ये, बहुत इजीली डिफीट कर सकते हैं एनिमीज को। क्योर करना पड़ेगा मुझे। डिसइंफेक्ट ये और ये तो मेडिसिन हम दोनों के लिए है। तो उन्होंने मतलब मिशन कंट्रोल ने बोला कि आई नीड टू प्रायोरिटाइज मेडिसिन ऑन माई सेल्फ, नॉट ऑन ईवा, क्योंकि मिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए पीछे कौन है? ईवा फाइट कर रही है क्या? कहाँ से आ रहे इतने सारे एनिमीज? ओके डन। ए और है क्या एनिमी? इसको बुला लेंगे यहाँ पे। आ क्यों नहीं रही है ये? कौन? हेलो हैं? ठीक है, एनिमी को डिफीट करने के बाद शायद आएगी। ओके कम ऑन। नहीं और भी, मतलब बैक टू बैक एनिमीज आ ही रहे हैं। डन? या और कोई भी है? यहाँ पे ना हूँ मैं। ओके कम ऑन। ए मतलब अनलिमिटेड एनिमी स्पॉन हो रहा है क्या? ये भी आ नहीं रही है ईवा, देखो बुला रहा हूँ नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, पूरे एनिमीज को क्लियर करते हैं यहाँ खड़े।
क्लियर या नहीं? और कोई है? और आ रहे हैं एनिमीज, तो शायद अनलिमिटेड स्पॉन होते रहेंगे एनिमीज, ऐसा लग रहा है मुझे। आई थिंक खत्म। ठीक है, अभी जल्दी से लीड करेंगे इसको, वरना और एनिमीज अट्रैक्ट कर देगी ये। हम परमानेंट कॉशन में है। अब आएगी, अब आ रही है, तो कॉम्बैट में रहने से नहीं आएगी। कैसे जाना है हमको? ऐसे इस साइड ही जाना है हमको। मैं फूड कंज्यूम कर लूँगा, ये शायद पॉइजन कर देगा हमको। हाँ, पॉइजन कर दिया। ईटिंग रॉटन, रॉटन तो मैंने नहीं खाया। एलिवेट सेंटर फूडबॉर्न, ये वाला एंटीडोट। Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. ठीक है, ईवा को बुलाना है। कहाँ गई है? कहाँ गई? दिख नहीं रही है। ओह, यहाँ तो लाइन ऑफ साइट में शायद रखना है हमको। नहीं, हेल्प करना है क्या? अच्छा, अभी मूव हो रही है, पता नहीं, अजीब था वो। ओह, शायद क्योर करना है। नहीं, नॉट नियर यू। अब क्योर कर सकते हैं शायद। नहीं, नो इलनेसेस, तो फिर ओह, शायद इसका स्टेमिना लो है। ये फूड ईवा को भी फीड हो रहा है, दिख रहा है। अच्छा, फीड कर सकते हैं ईवा को। This tastes like crap. वो भी टेस्ट अप्रिशिएट नहीं कर रही रशियन रेशंस को, तो वो रशियन ही है ना ये। अब शायद फॉलो कर पाएगी। हाँ, स्टेमिना लो था उसका। यहाँ खड़ के बुलाएंगे। लाइन साइड ब्रेक हो गया तो नहीं आएगी। अच्छा, आ रही है। तो नेक्स्ट फाइट बॉस के साथ होने वाला है। ठीक है, और एनिमीज है। स्टाइल करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गन्स दिए हैं हमको गेम ने, और वो भी मैं आरपीजी जैसा पावरफुल वेपन यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ। वो क्या था? कहाँ गई? ओ, यहाँ है। इसको भी फीड करना है, तो हमको फूड ढूंढना पड़ेगा पहले। स्टेमिना लो है यू का। ये फीड करने से पॉइजन हो जाएगी, तो ये फीड करके देखेंगे। नॉट बैड। रशियन फीड नहीं, हमारे लिए बचा के रखेंगे।
इस एनिमी को लूट करेंगे। आई होप कोई फूड दे दे। ये क्या दिया? एमो दिया। ओके ये मशरूम है ना? क्यों आ नहीं रही है? बहुत ही अनोइंग है ये पार्ट। नहीं आ रही। अब आ रही है। और थोड़ा फॉरगिविंग रखना था इनको। ऐसे ईवा के आई को बर्ड को शूट करें। बर्ड मीट यूज़ करके देखेंगे। और भी फूड चाहिए मुझे। ठीक है मैं खा के देखता हूँ फूड ये वाला बर्ड मीट। वाह गुड स्टैमिना रिकवरी। तो बर्ड्स को किल करना हुआ था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ गई? ठीक है यहाँ से चलेंगे। इसको ही ऑब्जर्व करके जाना पड़ेगा आगे हमको। पीछे देख के वॉक करना पड़ेगा। इसका स्टैमिना कुछ ज़्यादा ही जल्दी डाउन हो रहा है ईवा का। ऑलरेडी हंग्री हो गई वो। इस प्लांट को क्रैप करें। अच्छा मेडिसिन है वो। ड्रॉप डाउन करना कर पाएगी या नहीं? हाँ कर पाएगी। ओके एक एनिमी है यहाँ। इसने पता नहीं मुझे कैसे नहीं देखा। मैंने पीछे स्टेल्थीली इसको टेक आउट किया बट फिर भी नोटिस कैसे किया? कहाँ गई? ओह वहाँ है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अलर्ट में है इसीलिए। ओह और कोई नहीं। यहाँ पे कोई बर्ड मिलेगा तो मैं शूट कर दूंगा। वाह बर्ड है वहाँ पे। कहाँ गया बर्ड? दिख नहीं रहा। ईवा कहाँ गई? ओह यहाँ है बर्ड। नहीं बर्ड नहीं है वो। ये बहुत अनोइंग है ईवा। कहाँ गई? कहाँ है? अब इसको ढूंढते रहना पड़ेगा मुझे। कहाँ? ओह यहाँ। ओके इसको फीड करना है। ओह मैंने क्यों खा लिया? This is horrible. ये इसको पॉइजन करेगा बट क्योर कर देंगे। ओह पॉइजन नहीं किया उसको, सिर्फ मुझे पॉइजन करता है। थोड़ा सा भी फूड बाकी नहीं है। हंट करना ही पड़ेगा हमको। कोई बर्ड्स नहीं दिख रहे मुझे। नहीं दिख रहा कोई बर्ड्स।
Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others.
we'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war.
Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. फाइनल बॉस है ये मतलब बात करने दे नहीं रही है. ओके एक ही यूज़ करेंगे. वाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस हैं इसके. मतलब 10 मिनट टाइमर क्यों किक नहीं हो रहा है अभी तक. कहाँ गई. मैंने जो टैक्टिक यूज़ किया वोल्गन के अगेंस्ट वो यूज़ कर रही है मेरे अगेंस्ट ही अभी. गन डिसमेंटल कर दिया उसने. इसको सिक्योसी मैं नहीं कर सकता क्या. क्योर करते हैं पहले.
बुलेट स्टेबलाइज एक है, बोन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लिए ये यूज़ करना है ना, और बैंडेज। ओके, ओ इतने सारे। स्टेबलाइज कैसे करें ये? कितना इंजरीज उतने कम हिट्स के बाद ऑलरेडी। ठीक है, कौन सा वेपन यूज़ करेंगे अभी? ये यूज़ करेंगे। कहाँ गई ये? ओह वहाँ है। क्रॉसर दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा अभी दिख रहा है। क्यों मैं शूट नहीं कर पा रहा? ठीक है, स्नाइपर यूज़ करेंगे फिर। क्यों मैं शूट नहीं कर पा रहा इसको? ओह पास आ रही है। लेट्स गो अनआर्म्ड। चेज कर रही है। ओके You better run. क्यों मैं एक और वेपन गया। I'm disappointed. मैं सीक्यूसी कर ही नहीं पाया, तो मैं सीक्यूसी नहीं कर सकता क्या? तो ये और ये डेथ होने वाला मेरा। ओके, तो इस बार मैं स्टेल्थ यूज़ कर रहा हूँ और स्नाइपर यूज़ करेंगे। तो एस्केप होके स्टेल्थ यूज़ करके डिफीट करना है इसको, क्योंकि वाइट है ना, तो मैंने भी वाइट पहना है, इसीलिए मेरा कैमोफ्लेज ज़्यादा है। क्यों डैमेज कभी कभी नहीं लेती डैमेज ये। ठीक है, एक ही यूज़ करेंगे। कहाँ गई? ओ यहाँ पे भागना है दोबारा। लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, इस बार कर नहीं पा रहा। वहाँ भाग गई। कोई म्यूज़िक नहीं है बॉस फाइट के लिए, बॉस फाइट के लिए। स्नेक दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक, इसको शूट करने से हमको फूड मिल जाएगा। देख ले इसने मुझे। ओह रट नहीं करता। कहाँ गया? स्प्लेंट और बैंडेज। मतलब मैं शूट नहीं कर पा रहा इसको, कभी कभी डैमेज नहीं लेती, पता नहीं। उसको एस्केप कैसे करना पता नहीं, वो उस अटैक को। और सीक्यूसी में नहीं कर सकता इसको। फूड कंज्यूम कर लेता हूँ। ओह नहीं मिला फूड, शायद मैंने पिक नहीं किया। तो उसका जब बैक टर्न है सिर्फ तभी हम अटैक कर सकते हैं उसको, ऐसे लग रहा है मुझे। कहाँ गई? अच्छा अब कर सकते हैं डैमेज, बहुत कम डैमेज है। नाइन्टी % बहुत बढ़िया है वैसे कैमो। अच्छा वहाँ है एक और शॉट। ए देख लिया? नहीं देखा।
ओके You've gotten stronger. आ रही है कभी कभी मैं डॉज नहीं कर पाता। 90% कैमोफ्लेज हूँ, कैसे देख रही है मुझे? क्या करना है? बैंडेज करना है और फ्रैक्चर वाला कौन सा था ये ना? HP बहुत लो है मेरा। कहाँ गई? दिख नहीं रही है। अच्छा वहाँ है। हाफ HP पे है। तो एस्केप कैसे होना है? जब ये चेस करेगी तब नहीं हो सकता एस्केप। हिट लेना ही पड़ेगा हमको, एक मैंडेटरी हिट लेना पड़ेगा। बहुत ही कम डैमेज डील कर रहा हूँ मैं। कहाँ गई? उस स्नेक को कंज्यूम करना पड़ेगा मुझे। बहुत फिटिंग है क्योंकि स्नेक ईटर है ना गेम का नाम, तो ये इसको शूट करके मैं ईट कर सकता हूँ, स्नेक ईटर। ओ देख लिया, कैसे देख लिया मुझे? ओके अब म्यूजिक प्ले हो रहा है। आ रही है। हाँ मैंडेटरी हिट लेना ही पड़ेगा अगर वो पास आएगी तो। सबसे डिफिकल्ट फाइट है गेम का ये। बहुत कम डैमेज लेती है ये। कोई ऑप्शन होना चाहिए काउंटर करने का। ओ है, काउंटर कर सकते हैं। ठीक है अभी स्नेक को ईट करेंगे। आ रही है दोबारा। नहीं काउंटर नहीं कर पाया। आई एम डेड ना? नहीं एक और नहीं, डेड। ओके तो मैं इस अटेम्प्ट पे फुल स्टेल्थ कर रहा हूँ, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके। एक स्नाइपर शॉट और फिर स्टेइंग स्टेल्थ। बहुत ही स्लो है बट देख लिया। बहुत स्लो है पर मेरा हेल्थ रिकवर होने के लिए मुझे चांस भी मिलेगा और डैमेज भी नॉट बैड। अगर वो पास आ जाएगी तब प्रॉब्लम है। कहाँ गई? गन मैं अनइक्विप्ड रखता हूँ क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देगी गन को। अच्छा वहाँ है, एक और स्नाइप करेंगे। देख नहीं रही है। ओह यहाँ है, पीक करेंगे तो हिट लेंगे। आ रही है। ओह देख लिया इसने मुझे। दोबारा एस्केप होना। क्योर कर लेता हूँ।
ब्लीडिंग, बैंडेज, डिसइंफेक्टेंट। ये बहुत अनाइंग हो जाता है बार बार करना। अब कहाँ गई? ओके, शी इज ओवर देयर। देख लिया क्या? ये देख लिया। जब मैं रिकॉर्ड करने लगता हूँ तब मेरा लक बिगड़ जाता है। जब मैं मतलब ऑफ रिकॉर्डिंग जब मैं खेल रहा था बहुत अच्छा था मेरा लक। ओके, हील दोबारा। देखो यही मैं बोल रहा हूँ, बहुत अनाइंग हो जाता है बार बार वो करते रहना। बस कुछ हिट्स ही है। अच्छा वहाँ है तो एक बार मैं सिर्फ एक ही हिट में कर पाऊँगा। अगर एक और सीक्वेंसी उसने मुझे चेज कर लिया तो आई एम डेड। शायद मुझे थोड़ा वेट आउट करना पड़ेगा। एक स्नेक को किल करेंगे। यहाँ दिखता नहीं है, मतलब लूट कैसे करें। स्नेक को किल तो मैंने किया बट उसका लूट दिख नहीं रहा मुझे। कहाँ है? दिख नहीं रहा। वहाँ है ना उस ट्री के पीछे। ओह यहाँ है। सीक्यू से काउंटर कर सकता है बट पता नहीं कैसे करें। बहुत ही ज़्यादा डैमेज। ओके डेड। अभी म्यूज़िक प्ले हो रहा है देखो, बहुत बढ़िया म्यूज़िक है। मैं बहुत स्लोली खेल रहा हूँ। एक और हिट। तो ये टैक्टिक सबसे बेस्ट है, स्नाइपर यूज़ करना और अपोजिट एंड में रहना। उसके पास रहना नहीं है, बहुत दूर रहना है। एक और मतलब दूसरे कॉर्नर में, दूसरे एंड में रहना है। चलो हो गया ख़त्म, हो गया ना। फिनिशर कुछ करना है क्या? मतलब HP बार तो 0 है इसका। हाँ चलो हो गया। Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. मुझे बटन दबाना है क्या किल शूट करने वाला? मैं दबाने वाला नहीं हूँ, वेट करके देखते हैं। शायद दबाना ही पड़ेगा
शूट बटन। ओह, उसने खुद दबा दिया, मैंने नहीं दबाया। Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet.
Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. तो हमको चुनना पड़ेगा शायद, मैंने नहीं देखा। कौन सा लोडेड है कौन सा अनलोडेड चुनना पड़ेगा शायद। What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on! क्या करना है? ओह, 2 चॉइसेस हैं। पता नहीं कोई एक उठा लिया मैंने। नहीं है बुलेट कोई भी मेरे में, तो शायद मैंने रॉन्ग चूज़ कर दिया। It's a blank. Oh, that was fun.
Until we meet again, John. Snake! Give me a hand! Pull! Come on, pull up! We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got tone. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. सेव कर लेते हैं. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country.
I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva.
And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liandon easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No, far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot.
plans for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. तो ये एंड में जो मल्टीपल ट्विस्ट मिले बहुत बढ़िया थे ट्विस्ट। वैसे मैंने अर्ली गेम में बोला था ना कि कट सीन्स में बहुत ही सस्पिशियस लग रही है ईवा, और वो भी सस्पिशियस था कि बॉस ने स्नेक का लाइफ बहुत बार बचाया ना थ्रू आउट द गेम, तो लग रहा था कि वो स्नेक के साइड पे ही है। तो दोनों के बीच कुछ अजीब चल रहा था, वो अभी यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया।
और इन गेम्स में स्पेशली इस गेम में कट सीन ज़्यादा है, गेम प्ले कम है, तो गेम प्ले बहुत कम मिला हमको, सिर्फ कट सीन से मिला ज़्यादा, बट स्टोरी बहुत बढ़िया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सारा एंड होने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेम। ब्लैक स्क्रीन क्यों चल रहा है? ओके, तो क्रेडिट्स स्किप करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal. Mr. Director. एक और ट्विस्ट दे दिया एंडिंग में, वो जो आवाज़ नहीं दे रही थी ऑसलॉट था वो था एक्चुअल एडम एंड ईवा जो थी उसका एडम ये था ओरिजिनल कॉन्टैक्ट स्नेक का एडम। उसका भी बिहेवियर बहुत सस्पिशियस था, स्नेक की जान बहुत बार बचाया उसने भी। तो वो जो उन्होंने लेगेसी दिया वो फेक दिया उनको, चाइनीज़ को, और ओरिजिनल ऑसेलॉट ने यूएस को दे दिया। वेपन मिल गया, पेट्रियट। तो इन वेपन्स और इन फेस पेंट्स के साथ नया गेम खेल सकते हैं, न्यू गेम प्लस अगर स्टार्ट करना है तो। कैमोफ्लाजेस भी बहुत मिल रहे हैं हमको, नेशनल फ्लैग, फेस पेंट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया सेव फाइल पे मैं सेव कर लूँगा इसको।
ओके ख़त्म हो गया, बाय बाय।